This conference will now be recorded. या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद सर. Ya Ali Madad. या अली मदद, या अली मदद सर. या अली मदद, या अली मदद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान. मुश्किल आसान, या अली. मदद रसान, या अली. या मौलाए मेहरबान. हमारे बहुत सारे भाई बहन दुनिया भर में तकालीफ के अंदर, मुश्किलात के अंदर, जंग व जदल के अंदर, इकोनॉमिकली डिफिकल्टीज के अंदर, हेल्थ वाइज डिफिकल्टीज के अंदर है मौला. और किसी वजह से भी कोई भी हमारा भाई बहन किसी भी मुश्किल में है मौला, मुश्किल आसान या अली मौला, मदद रसान या अली मौला. ये मौला मेहरबान, आज हम एक बार फिर इल्म की तलब के लिए for the sake of knowledge and only your pure knowledge we have gathered here today, Mola. Please accept our humble shukrana. Please accept our shortcomings. Please keep your Mubarak hand on our shoulder ताकि हम कोई ऐसा काम कर सके कि जो तुझे पसंद हो और तेरे हुजूर में कबूल हो. नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी. एक बार फिर नाचीज व गरीब की जानिब से तमाम साथियों को बहुत ही आजिजाना या अली मदद का तोहफा कबूल हो. Today we will move on the same subject, importance of ilm in understanding our tariqah. This will be part 2, and as you see on your screen के एक खूबसूरत सवाल को लेकर हम इस सेशन का आगाज करेंगे, and then we will continue with all the question and we will try to cover as many as possible. I'd like to thank everyone for listening and then sending these beautiful questions. If for whatever reason, if we do not cover or are not able to cover your question in today's session, remember we are back every week. We will continue to take your question. We will never shy away from your question. And if Imam helps us with Imam's mercy, with Imam's rahmat, we will do our best to reply to each and every question. One more thing I'd like to add, I always would seek your permission. If any question is not correct, either I will seek your help, your permission to make that question correct, so you may receive the correct answer. It is not that I don't like the way you asking question. It is just I want to give answer in the full manner so everyone can benefit from it. Thank you again, everyone. Let's look at this question. And we will look at this ayat.
and then we will talk about it, ताकि हमें उसका पूरा बैकग्राउंड पता चले। हमारे एक साथी ने बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था कि कैसा मुमकिन हुआ कि मौला अली जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ from the beginning of his nabuwat, from the day one until the last day before demise of Prophet Muhammad, then on the very next day we noticed that most of the people around Prophet Muhammad, majority of them, did not accept the imamat of Ali, which was the sole purpose of the nabuwat of Prophet Muhammad. What a beautiful question. Look at this ayat, and we will see how it's related to this. We have talked about 1771 ayat before this, in which Allah says, all of the people will be called upon on that day. What day? On the day of Qiyamah, with their Imam. And the very next ayat in front of us says, but those who are blind or who have made themselves blind to it in this world, they will be blind in hereafter and much more astray from the path. अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। आपने देखा कि आयत में इस तरह से था कि हर जमाने के लोगों को क़यामत के दिन उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, मगर जो इस दुनिया में जानबूझकर अंधे हैं, यानी कि इमाम से मुंह मोड़े हुए हैं, वो आखिरत में भी अंधे होंगे, यानी कि वो इमाम की कुर्बत को, दीदार को नहीं होंगे, बल्कि वो सिरातुल मुस्तकीम से बहुत ही ज्यादा दूर होंगे। टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आपको पता है कि नाचीज ने अपनी अदना सी कोशिश करते हुए कुछ सवालात को फरमान की रोशनी में समझना होता है, कुछ को ज्ञान की रोशनी में समझना होता है, कुछ को इल्म और लॉजिक की रोशनी में समझना होता है, और कुछ सवालात के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। Sometimes we have to peek in our past, in our history, to learn something of today. I'd like you to take a journey with me all the way back to the day one. आदम के जमाने में चलते हैं हम, and let's see कि क्या ये बात जो आपने इस सवाल में पूछी है, what happened at the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Ali Murtaza alayhi salam. Let's learn that from the past, we will learn that from present, and inshallah we will peek into the future. When खुदावंद ताला ने आदम को बनाया और फरमाया, after he molded Adam, he said, matter of fact, while he was molding the Adam, he had warned the angels, when I finish
perfecting Adam. And when I blow my nur into him, then and then only prostrate to him. ये उनका अमर था, यानी कि उनका हुक्म था. This was the command of Allah to the listeners, to the angels. What happened on the very first day? Iblis did not follow the Amr. How did he not follow the Amr? Because these angels and the Iblis, they were not heavenly angels, but earthly angels. उर्दू के अंदर ये समावी फरिश्ते नहीं, जमीन के इंसी फरिश्ते थे. और इंसी फरिश्ते होने की वजह से उनके पास फ्री विल थी. और इब्लीस एक नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल थे. Iblis was not the only one, but in the representation, he was the leader or representation of a group of people who refused to follow the Amar-e-Ilahi, the command of Allah, और कहा कि हम आदम जो एक इंसान की शक्ल में है, उन्होंने उसके जिस्म को देखा, उसके अंदर जो रूह खुदावन ताला ने फूकी थी, जो नूर उसके अंदर रखा था, they could not see, and because of that they refused to bow down to Adam. आपने देखा कि पहले ही दिन से क्या उन्होंने 40 दिन तक नहीं देखा था? Were they not watching Allah creating and molding and perfecting Adam for 40 days? And did they not see Allah blow his nur into Adam? क्या उन्होंने नहीं देखा कि किस तरह से खुदावन ताला ने अपना नूर आदम में रखा था? लेकिन जिस्म जो है ना, वो मसला हो गया उनके लिए. और उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे जैसा है, बल्कि ये तो हमसे भी गया गुजरा कोई इंसान है, नौज़बिल्ला. हम तो बड़े तबके के, बड़े दर्जे के फरिश्ते हैं, हम क्यों कर इसको मानेंगे? हमारे पास से बड़े बड़े पोस्टें हैं, हम पैसे वाले हैं, हम सूट टाई वाले हैं, क्यों हम इसको मानेंगे? और इसके अंदर कौन से पर लगे हुए हैं? He is no better than us, why should we believe and prostrate to him? Hi, let's come to Hazrat Noah alayhi salam. You can see people did not accepted him. What was the reason? He was the prophet of Allah. Some trusted him, some followed him, others did not. There is no difference between the event of Adam and event of Hazrat Noah alayhi salam. Representation. एक ग्रुप ने एक्सेप्ट किया, एक ग्रुप ने एक्सेप्ट नहीं किया. Then came the time of Hazrat Ibrahim. यहाँ पर हमको एक नई बात नजर आएगी. We will see a new thing when Hazrat Ibrahim came. And you know what that was? That the very same people who were the follower of Hazrat Noah alayhi salam had said to the follower of Hazrat Adam alayhi salam,
oh my brother and sister, look, new guidance, a new prophet has been sent from Allah. Why don't you follow the fresh new guidance today? And the people of Adam said, no, we have our prophet, we have our ilm, we have our book, we have this and that. They made all of the excuses and said what we have is good enough. What our parents has given to us is good enough. We do not need you. The very same people, when time came for Hazrat Ibrahim, you know what they said? What Hazrat Noah alayhi salam has given us is good enough. We do not need a new guidance, new prophet. You keep your new prophet. You keep your new guidance. What we have is good enough from Hazrat Noah and Hazrat Adam before that. This was the very same people. They refused. Time came for Hazrat Musa alayhi salam. The very people who was telling the people of Noah and Adam, what is wrong with you? Why don't you follow the new guidance, the new prophet, the prophet of Egypt, Prophet Hazrat Musa alayhi salam? Allah had promised us He will always and always and always have a guide for you in your time and the age and the place. Weren't you the same people who were telling us before that we should always have a new guidance? The people who followed Ibrahim alayhi salam and people who followed Hazrat Noah alayhi salam, people who followed Hazrat Adam alayhi salam, refused to follow with saying, this is a key word, ये जो कहा ना उन्होंने यही असूल बन गया इंसान का. Allah's refused, the human, common, refused by saying what? What we have is good enough for us. We don't need you. Again and again and again, the history was repeated. Again and again. Same thing happened as Hazrat Isa alayhi salam. और यही किस्सा दोबारा से दोहराया गया जब हजरत ईसा ने कहा कि मैं खुदा का भेजा हुआ हूं. मुझे भी खुदा ने इसी तरह से रूह और नूर दिया है जिस तरह से आदम को दिया था. मैं भी चोजन हूं जिस तरह से आदम, हजरत नूह अलैहि सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम, मैं ये तमाम पैगंबरों की तरह आपके सामने खुदा के अमर से I have come over here just like them and I have brought you a new fresh ilm, guidance with the amar of Khudawant Ta'ala. You know what most people said? You got it now. They said, nope, what we have is good enough for us. We do not need you. You look just like me and him. What makes you so special? ये जो जिस्म है ना, the human body. They were looking at that human because he looked just like him. Why should I believe you? I have a better position. I know everything. I don't need new knowledge. I don't need new fresh guidance. I don't need you. Same statement which they had given to the previous people. Time came and the last Natik, last prophet of Allah, to complete
the religion of Allah, the Islam, He sent Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam as the Sardar-e-Anbiya, the greatest Natik prophet, with the book, Ayat, and the Quran. Before we come to Mullah Ali, when Prophet Muhammad came the very first day within the family and said, I have been chosen and given the prophecy, and I am giving you the invitation. मुझे खुदा ने एक प्रॉफिट बनाया है और चूज किया है, सेलेक्ट किया है. जिस तरह से आदम को, जिस तरह से हजरत नोआ को, जिस तरह से इब्राहिम और उसकी आल को मुझे भी खुदावंद ताला ने नबूवत दी है और आज के लिए इल्म इनायत किया है. तो ओ माय फैमिली, would you follow me? आप जानते हैं, in the male family only one child accepted. That was Mullah Ali himself at the age of 8 years. One lady accepted, Hazrat Bibi Khadija Tul Kubra, the wife of Prophet Muhammad. None of the other family member accepted. Guess what? You know what they said? The religion of our forefather, of the Ibrahim, is good enough for us. You are nothing but a human just like me. Why would I follow you? Matter of fact, the uncles of Prophet Muhammad said, we are much older, much more respectful, much more learned. We know everything. We don't need you. Isn't that the same statement that other people had given in the history? You see how the history was repeating, right? If that is the case, if we understand how history repeats, so we learn two things. One, we as a human, we do not like changes. We love to live in past. हमको माजी में रहना बहुत पसंद है, हमको चेंजेस पसंद नहीं है, हमको नई चीजें पसंद नहीं है, हमको पुरानी चीजें पसंद है. You know why? Write this down. Because past is safe. Past cannot hurt you. Present and the new things, because those are unknown, may hurt you. So we love past. That's a human nature. Past is predictable and past is safe. Past is hindsight, 2020, we can see. माजी में रहना आसान है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं और हमको पता है कि माजी जो है हमको हर्ट नहीं कर सकता. That's the human nature. That is exactly what the family of Prophet Muhammad had said to Prophet Muhammad. And when after 22 plus years, Mullah Ali, shoulder to shoulder, served and protected the Prophet and the religion of God, Islam. He fought every single fight. He gave the Tawil, understanding, and became the witness, the right hand of the Prophet of the time. And people saw that.
They saw how the Prophet of the time has given and dedicated Mullah Ali for the Tawil, for the ilm, and for in all matters, he was there shoulder to shoulder. They were watching it, they were seeing it. But there was one problem. You know what was the problem? Ali was a young man compared to those other companion of Prophet Muhammad. पता है क्या एक मसला था कि मौला अली बहुत छोटी उम्र के थे, जबकि दूसरे जो असहाबा थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो बड़ी उम्र के थे, पैसे वाले थे, सीट्स के साथ थे. They had the influence, they had the money, they had the backup of the community. If they would follow Mullah Ali, they would lose their seat, they would lose their influence, and they will be following a young man. Because by the time Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam was leaving this world and declaring Mullah Ali to be the Imam, he was less than 31-year-old. Compared to other companion of Prophet Muhammad, they were in their 50s, 60s and 70s. यहाँ पर मौला अली का जो जिस्म था ना, the young age, वो उनके लिए मसला बन गया, क्योंकि मौला अली को मानने में उनकी जो सीट थी, उनका जो इन्फ्लुएंस था, they would lose that, वो चला जाता. अब कशमकश आई. हक को माने या अपनी सीट को संभाले. आपने देखा, हक को माने या अपनी सीट को संभाले. Again, the history was repeated. When Ali said, I am the Imam chosen by Allah and the Prophet and the Quran. The people said, what? Yes, you are right. They said, we have the book, we have the knowledge, we have everything we need. We don't need you, Ali. History was repeated. आपने देखा कि ये तो माजी का लेसन था. चले आज हम इसी लेसन को आज के जमाने में देखते हैं. आज के जमाने में, because there was in the past, right, history. You can see Imam after Imam after Imam, there were people who would come in and who would leave. यानी कि वो इमाम के साथ आते थे जिस तरह से वो पैगंबरों के साथ आते थे और फिर चले जाते थे. आज भी यही ह्यूमन नेचर है. आपको ऐसे मुसलमान, ऐसे शिया एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्माइलीज भी मिलेंगे जो माजी में रहना पसंद करते हैं. They love to live in past, and they will say, why Imam is living in Europe? Why is he marrying white woman? Why they are wearing suit and tie? What happened to the jabba and the beard and the turban? No, 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 no. We want Imam to look the way we think they should look. क्या कहते हैं? हमारे इमाम को ऐसा दिखना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं. आप बोलेंगे, who said that? When did they say that? There was a group of people. I'm not going to name the tariqa. One of the tariqa in the Shia religion.
In time of Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to that Imam, came to, at that time, association. Today's Tariqa board. And they said, we have thousands and upon thousands and thousands of followers. We understand that Imam, the previous Imam, 40th Imam, is the correct Imam, Ale Nabi, Aulade Ali, Imam Barhaq in this time. We would like to join, we would like to return to the true religion of Islam, and we like to join the Ismaili Tariqa. We like to be the follower of Aga Khan. The leaders in the session, they were very happy to hear. Remember at that time, the China, the Russia, the Tajikistan, and all of those Ismailis were still under the communism. Only non-Ismaili Tariqa was the Khoja Jamaat. At that time, less than 1 million. And this other Jamaat, if you will do the search, you will know which Jamaat I'm talking about. But we don't need to worry about that. They were almost equivalent to the quantity and the numbers as Ismaili or more. क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जमात थी, तो हमको बहुत मजा आता कि अगर हम 1 मिलियन में से अचानक से 2 मिलियन हो जाए, क्या मजा आता कि हमारे इमाम को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन्होंने इमाम के हुजूर में दरखास्त की, या मौला फला फला जमात जो है वो समझ गए हैं, वो जान गए हैं कि आप इमाम बरहक हैं और वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। मौला ने कहा छोड़ो, let it go, don't worry about it. उनका तरीका अपना है, अपना तरीका अपना है, उनके लिए हमारा तरीका फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा, आप छोड़ दें उनको। बोला जैसे आपकी मर्जी मौला, and they left. Few days later, those leaders from the other Jamaat came back. Again, they said, please ask your Imam to accept us. The leaders told them that our Imam is saying, it would not be easy for you to follow our tariqah because we are no longer in Shariat and tariqat. Our tariqah is very hard for you to follow. They said, no, 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 no. We will do anything and everything your Imam tells us. We will follow him. The leaders came back to Mullah again. When Mullah was in Pune, leaders came back. Mullah, they are insisting. वो जोर दे रहे हैं, वो जिद कर रहे हैं कि हमको आप अपने मजहब में कबूल कर लें। मुल्ला ने कहा अच्छा, all right, so and so date को फला फला दिन आप उनको ले आना, अगर वो मेरी बात मान गए हैं तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। Bring them on so and so date. If they accept, I will take them into our tariqa. Remember, what Mullah knows, we don't know. So, Mullah ने 2 बड़े जर्मन शेपर्ड इंग्लैंड से मंगवाए। वो कुत्ते आ गए बड़े बड़े, जर्मन शेपर्ड बड़े बड़े। मुल्ला अपने बागीचे में, outside his home in Pune,
दी आगा खान प्लेस, उसके लॉन के अंदर, बागीचे के अंदर मौला कुर्सी लगाकर बैठे और दोनों कुत्ते को अपने बाजू में बिठाया और लीडर से कहा जाओ उनको ले आओ। जब वो बंगले के अंदर दाखिल हुए और देखा एक जवान इमाम, नो दाढ़ी, नो टर्बन, नो जब्बा, सूट पहनकर, एक अंग्रेज एक इंग्लिश आदमी की तरह दो कुत्तों को प्यार कर रहे हैं, यूं करके सुला रहे हैं, दो जर्मन शेपर्ड। नौजबिल्ला नौजबिल्ला, ये कैसा है आपका इमाम? कहने लगे अपने लीडर से कि ये तुम्हारा इमाम कैसा है? नौजबिल्ला, इस्लाम में कुत्ते हराम है, ये आपका कैसा इमाम है? ना दाढ़ी है, ना टर्बन है, ना जब्बा है, ये तो सूट पहन के बैठा हुआ है। नौजबिल्ला 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 करके भाग गए। You see, what did they see? They saw a human, a body. They want the imam to look the way they want it to look. क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे इमाम ऐसा होना चाहिए जैसा हम कहें, हमारी आंखों को अच्छा लगना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जैसा हमारा तस्वुर है। We want the imam to look the way we want him to look, the way we have imagined him to look. यही तो मसला बन गया कुछ लोगों के लिए। Today we will see not only others, forget about others, even our own Ismailis sometimes judge the Imam the way he looks and feels, because they don't understand कि इमाम हमको फॉलो नहीं करता है, हम इमाम को फॉलो करते हैं। Imam is not obligated to follow our way of thinking. We should follow the way of Imam. हमने उसकी बैयत ली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वही स्टोरी जो हमारे पास में थी कि उन्होंने कहा ये तो हमारे जैसा आदमी है, ये जिस्म उनके लिए मसला हो गया। They would say he looked just like us, his body and the way of living have become the hindrance, a problem for them. That's why you see sometimes, unfortunately, they are born in the right and the correct and the current religion, the tariqah, but then they leave. क्यों? कि इमाम का तौर तरीका उनको अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि हमारे पास कुरान है, हमारे पास माजी का जो इल्म है वो हमारे लिए काफी है और वो हमारे लिए सेफ भी है। माजी में रहना पसंद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम नमाज क्यों ना पढ़े, हम रोजे क्यों नहीं रखें, मौला के सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, हमने इमाम की बैयत की है, हमको आज के जमाने का इल्म, आज के जमाने का जो फरमान है उस पर चलना है हमको। Let's come back to this ayat and then we will finish, we will come to your questions. हर जमाने के लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अगर आपने इमाम को छोड़ दिया, अगर आपने इमाम पर यकीन ही नहीं किया
तो फिर खुदावंद ताला अगली आयत के अंदर फरमाते हैं कि उन्होंने अपने आप को जानबूझकर अंधा बनाया है, उन्होंने इमाम से नजरें मोड़ी है, उन्होंने इमाम से अपने आप को अलहदा किया है। तो वो यहाँ पर भी अंधे, मीनिंग इमाम की गाइडेंस के बगैर, और वहां पर भी अंधे हो गए, उनको इमाम का दीदार नहीं होगा, बल्कि वो सिरातल मुस्तकीम से बहुत ही दूर के भटके हुए होंगे, यानी कि माजी में कहीं होंगे। आप देखा इस आयत का मतलब, अगर हम इमाम के साथ है तो हम सिरातल मुस्तकीम पर है, हमारे जमाने का इमाम के साथ हमको बुलाया जाएगा। अगर आपने इमाम को छोड़ा, इमाम ने आपको छोड़ा और आप बहुत ही दूर के भटके हुए होंगे। यहां पर इस सवाल का जवाब पूरा होता है। लेट्स कम टू आवर